Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are going to start with very important accounting standard, that is the accounting standard based on the liabilities. AS 15. Accounting standard 15. So can you tell me whether you want this accounting standard in detail or you want only exam oriented approach for this standard? Because I'm not aware whether you are able to understand the concept of DBO and all. And in last lecture, I think in our regular batch of May 2025, for 24, I had not covered many things. So if you are telling me to take it in detail, I will take it in detail, these accounting standards. So write in comment section, fatafat. AS 15 in detail and AS 29, I will show you only 100 pages book. 15 to 20 minutes we will give for the S15, 29, and S15 will take it in detail. Okay, because many concepts I have not covered in the last regular lecture. So if you are telling me to take it in detail, I will take it in detail. Okay. This session is very important. S15. चलो तो start करना है. Okay. चलिए. So S15 basically it deals with employee benefits. Employee benefits. Now, what is employee benefits? Salary which we are paying. So for salary, whether we want any accounting standard, but definitely not. We don't want any accounting standard for salary which is paid or bonus which is paid. But still, we have this accounting standard. Why we want to cover this accounting standard? Because there are some expenditure which we are giving after employment, that is a post-employment benefits, and how we are going to record that. And we are contributing in any provident fund for the benefit of the एम्प्लॉय सी कोई भी एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं कि बस सैलरी देके बेटा रिश्ता खत्म नहीं करना है. ही ऑलवेज वर्क्स फॉर यू. तो इन फ्यूचर we want to give you some benefit to our employee, and how we are going to record it in the books of accounts, that we have to understand in this accounting standard. Okay, so you are clear with this accounting standard logic. Introduction part. S15 deals with accounting treatment and disclosures for consideration which is given to employee. Not only salary I'm talking about. Not only salary, but we are talking about any consideration which is in exchange for services which they are providing to you. Okay. So this is in the books of employer. The standard is basically, it's not in the books of employee. This is standard is basically in the books of financial statement. Kiska? To company ka, and that is but obvious. It is an employer. Okay. So similar to S7, S7 we are doing it in the books of contractor. It is in the books of employer. Okay. Now S15 includes formal plans, legislative requirements, and informal practices also. Now informal practices means what? Suppose you are paying Diwali bonus, okay, every year. So you have to provide for that Diwali bonus every year. Suppose if your year ends on 31st of December and 30th of September, and you are paying Diwali bonus in the month of October, okay, so at least make a provision in the month of September, and that is called as informal practices. So that is by tradition you are paying it. Okay, formal plans, legislative requirements, or informal practices. So these are called as S15 includes these benefits. S15 does not deals with accounting and reporting by the employee benefit plans. Okay, we are not talking about any benefit plans in the books of any provident fund. No, we are doing it in the books of, we are not doing any entry in the benefit plans. Okay, so how they calculate their returns and all, no, we are not concerned with that benefit plans. We are doing it in the books of employer and share based payment. Suppose if we are paying any amount in the form of shares to your employee, that is the ESOP plan, so it is not covered over here. Okay, so S15, because we have a separate Ind AS for share based payment, so employee benefits we won't consider that amount. Okay, so very simple. S15 does not deals with any employee benefit plans accounting reporting by the employee benefit funds. So that is a provident fund in the books of that who is keeping that fund. We are not doing accounting in that book. We are doing accounting in the books of employer. Got the concept? Yes. And share based payment is also not covered in S15. Okay. So
Okay, students, normally you have, yes, any difficulty that you are finding in this accounting standard that you want to communicate? Raise your hand. सर ये स्टैंडर्ड में क्या नहीं समझ में आता है आप लोगों को? एनीथिंग? यस अशिता बेटा, परसों नहीं थे आप? लास्ट सेशन में नहीं थे? सर आई वॉज देयर बट लास्ट वाला पार्ट इम्पेयरमेंट वाले में मैं नहीं थी। इम्पेयरमेंट मॉर्निंग में अटेंड किया कल का सेशन आपने? नो सर, अभी रिकॉर्डेड देखना होगा। इम्पेयरमेंट रेगुलर लेक्चर का देखिए, अभी की जो बैच रनिंग ऑन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, वहां पे बहुत डिटेल में लिया हुआ है सीजीयू एंड ऑल कॉन्सेप्ट। ओके, सो मुझे मेरे ओके। पिछले लेक्चर्स नहीं पसंद आए थे, तो अभी मैंने और डिटेल में इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, तो आप ये लेक्चर्स को ज्यादा करके देखिए। यस, आपको ये स्टैंडर्ड में क्या डिफिकल्टी आती है? सर मुझे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जो डीबीओ है उसमें डिफिकल्टी आ रही है। डीबीओ में वो सभी को डिफिकल्टी है। DBO is not very easy to understand because when you are going in the practical world, then you will understand it properly. And weightage for this chapter is actually 4 marks. तो अशिता, हमें वेटेज वाइज जाना है या थोड़ा समझ के जाना है, क्या आपको लगता है? सर अभी एग्जाम ओरिएंटेड वे से देखा जाए तो एग्जाम वेट। ओरिएंटेड है तो मेरे लिए 15 मिनट में स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, फिर डीबीओ आपको नहीं समझ में आएगा अभी। फॉर दिस स्टैंडर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर स्टैंडर्ड्स, उधर तो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे। फॉर दिस स्टैंडर्ड डीबीओ करना है तो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा। यस सर, करना है। हाँ, तो डीबीओ ऑप्शन में रखना है, डीबीओ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग ओवरऑल इसमें ये कर सकते हो, मैं आपको टू द पॉइंट बता दूंगा। पर डीबीओ करना होगा तो उसके पीछे का हिस्ट्री पकड़ना पड़ेगा अभी। ओके, ओके सर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में ही जाते हैं। माइक आज आजू बाजू में अराउंड सराउंडिंग में आवाज है क्या आपके? नहीं सर, अभी तो नहीं नहीं, है। ठीक है ठीक है। तो यस, तो आप अपना माइक अनम्यूट ही रखना। 4 important points that you have to remember. This is applicable to all employees. Okay, all employees मतलब कौन बेटा, अशिता? सर ऑल एम्प्लॉयज मींस पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम, परमानेंट और Yes, yes, टेम्पररी। yes, yes. Full कैजुअल। time, part time, and casual staff. Okay, करेक्ट है। देन दिस बेनिफिट्स जो हमें देने हैं, तो जो बेनिफिट्स देने हैं, it might be in cash or it might be in kind also, but it not in the form of shares. Benefits include those benefits which are provided to employees and their dependent also, his or her dependents is also covered over here. Okay, so ये दोनों का यहाँ पे डेफिनेशन में हमने ये कवर किया हुआ है। And payments can be made directly to employees dependents and other parties. अदर पार्टीज को भी हम लोग यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो अदर पार्टीज मीन्स व्हाट? वेयर यू आर doing any contribution. Okay, see, suppose company, if they do not invest anywhere after 15-20 years, whether Ashita, they are able to contribute or whether they are able to pay someone, their employees, एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा तो सर पॉसिबल है क्या? कंपनी को यस सर। जब 10-15 साल के बाद पेमेंट करना है, तब उन्होंने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया होगा, तो इज इट पॉसिबल कि वो लोग पैसा दे सकते हैं? नो सर। दैट्स व्हाई what they are doing, they are contributing in any fund. सपोज तू मेरे पास एम्प्लॉय है, यू आर माई एम्प्लॉय, एंड you have given your 100%. You worked with my organization for 25 years. Okay. After becoming a CA, 25 years में आपने CA और you are working with me for 35 years. You contributed in my success. So after your retirement or at the time of leaving my organization, should I pay you extra amount other than salary? यस सर। Yes. And that extra amount is my planning, correct? That amount is expenditure for me after 25 years, 30 years. But I should record this as an expenses from the current year itself. Okay. यस Now सर। I'm giving you, for example, now I'm giving you the pension plan.
Okay, pension plan means if you are my employee for more than 5 years, I will pay you at the time of retirement whatever your last drawn salary multiplied by number of years of completed services के. तो tell me, what is the vesting condition? I have to work in the organization for more than 5 years. Yes, so 5 years. Okay, so that 5 years is called as vesting. Okay, now if you worked in my organization for 3 years, not work, you're working in my organization for 3 years. So still 2 years you have not completed, correct? But still Yes, I have to make a provision which is called as unvested option, because might be out of 100 employees, only 10 employees will leave my organization. Okay, after 5 years or before 5 years, how many employees will leave? 10 employees. So 90 employees are going to continue with me after 5 years also. So though their 5 years are not completed, I have to make a provision from year one itself for those employees who have not completed their 5 years. Those employees who have completed their 5 years, they are already that their options are vested option. Now you are getting these terms, vested option versus unvested options. yes, sir. Yes, because we need these options ka accounting, vested versus unvested. And these words are very critical in this accounting standard. This accounting standard is not at all difficult. But what happens, this standard itself, wordings are very difficult. And that we are going to learn in this accounting in today's session. Okay, आज वर्ड्स के ऊपर ही हम लोग खेलेंगे. आई मेड वेरी सिंपल. मैं पिछले 2 दिन से लगातार ये स्टैंडर्ड पे काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 15 आवर्स. और अभी मैंने इसको और बहुत सिंप्लीफाई कर दिया. ओके, आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज ये स्टैंडर्ड बहुत टेक्निकल स्टैंडर्ड है. सो यू आर गेटिंग दिस ऑप्शंस का एग्जाम अकाउंटिंग क्या है, एंड दिस सिंपल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. शॉर्ट टर्म पेमेंट्स व्हिच वी आर मेकिंग, that is after 12 months, before 12 months, is very simple. We don't have to record present value. But those payment which I have to make it after 35 years, and if I am doing the provision today itself, so I have to discount it. Got the concept? मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे उसका डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा. और डिस्काउंटिंग मतलब वो एफएम वाला. और उसके वजह से बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है. आया समझ में? And what is Yes, the basic logic? This is the deferred expenditure concept. This is the deferred expenditure concept. Concept I'm telling you. Expenses will not be recorded after retirement, but expenses will be deferred over the number of years for which you are working with me. आया समझ में? yes, sir. Yes. This is how we are going to do it. Now, I have to estimate your salary after 35 years. So, whether I'm a right person to estimate that? No, sir. No. So, who will estimate that salary? Actuarial. Now you know these words. Actuary. Actuary is a person who has the technical knowledge. Okay, so actually we will appoint him. So whether as a chartered accountant, it's whether my responsibility to do that assumptions and all these things. No, sir. No, because the estimation after 25 years, I am not the technical person. For this, I will need some certificate. And that certificate, on that base, I will do the accounting. तो मेरा काम तो इजी है. मेरा काम क्या है? उसकी सैलरी डिटरमाइन करना नहीं है. मेरा काम उसका अकाउंटिंग करना है. और वो अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है. तो हमें एक्चुअली का काम नहीं करना है यहाँ पे. ओके, एक्चुअली विल टेक केयर अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट. यस, एनीवन हैज डिफिकल्टी टिल नाउ? कि नहीं समझ में आ रहा है एनीथिंग? रेज योर हैंड. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, रेज योर हैंड. क्लियर है? So now you are, yes, creating interest in this accounting standard, beta. Ashita. Yes, sir. अभी समझ आ रहा है. हाँ, this is a deferred expenditure. Today I will explain it in very simple language. Okay, because मैं आज मॉड्यूल का लैंग्वेज भी नहीं यूज करूंगा, ना मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वर्डिंग्स यूज करूंगा. टुडे मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करूंगा. और इसको भले टाइम लगेगा तो चलेगा. S29 इज वेरी सिंपल. यू कैन वॉच दैट सेशन में 100 पेजेस के बुक में आपको वो लैंग्वेज को बता दूंगा. एंड वी सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑन S29. ओके, तो डोंट वरी अबाउट S29. वो आपको एक चार्ट में से भी समझ में आ जाएगा. मेन इसका कंसर्न है, आज का लेक्चर मेरा ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि S15 आपके दिमाग में मुझे ठुसा देना है. ओके, चलिए. सो अदर पार्टीज, नाउ यू अंडरस्टूड इट.
Why this is important now you understood it. So what is the objective? Objective of this accounting standard is the matching cost associated with the employee benefit. Very simple. So ये सभी concept, deferred expenditure, matching. अभी matching principle क्यों use करना है? Yes, why you tell me why matching principle is over here? Whether this is expenditure or you are going to earn some income also. Sir, we will earn some income also. How? Tax का कैसे income आया? हाँ जी, बोलिए. How I am going to get the income from this? I am going to provide for this, no? Yes, sir, No we are going to provide the employees expenses. Income कहाँ expenses. से आएगा? Income कहाँ से आएगा? Sir, because employees are working for us. That is not my revenue, no. Revenue Acha. means here what they want to tell you. You will invest in some plans in any fund. So that fund is also giving you some amount in return, no? Yes, sir. How you are going to calculate that return? Is and whatever you are getting that return from that funds, okay, where you have invested. So there are two funds. One is you have not what you can call it as. There is no specific fund for that. Okay, whatever amount you want to pay, you will that is not we can call it as unplanned funds. Okay, unplanned funds means what? Whenever you will have money after certain years, you are going to pay them. Okay, from your general funds. And there are some specific funds also. You are good planner. Okay, you have good plan. You will invest in that plan, and that plan will give you returns. It's like your LIC. You're getting this concept? Yes, sir. Okay, so for example, suppose I'm only generating income by doing all these activities, by taking classes, then from my professional fees from other businesses or rent income. So all income I'm only generating. And suppose I have not planned anything for my retirement, or suppose for my medical expenses after 60. So if I have no plan, and suppose if there is some medical emergency occurs after 60 years, I have to pay from my pocket. If there is no mediclaim, nothing I have paid for the claim, any plan is not there, then but I have to pay from my pocket, that is from my general funds. Correct? Yes, sir. And second one, I have proper plan where I invested, and I will get that returns for every year. So that is my income. And that is how I'm going to match that my cost of employee with returns which I'm getting from the plan asset. Now you remember that word plan asset? Yes, sir. Yes, sir. So plan asset matlab kya? Where you invested. Because you want money after 60 years, after 35 years. As an employer, I want money after 35 years. And for your payment, I will invest it in some asset. And that is my plan asset. So plan asset, unplanned asset. If there is no unplanned asset, no plan asset, then I have to pay from my general fund. Okay? Yes, sir. Yes. Anyone has query बेटा इससे related? देखो एक तो मुझे इसमें plan asset, देखो technical words एक अभी तक कौन से words आए आपने note down किए क्या? कि कौन से Yes, words sir. मैंने बोले थे? कौन से words बोले मैंने? Sir, Technical आपने words. vested, फिर Vested, non-vested, non-vested, then an asset. asset, plan asset word use किया. Okay. तो वर्ड्स तो भी लिख के रखो बेटा. ये वर्ड्स लिखो मतलब आपको कीवर्ड्स तो भी याद आ रहे क्या नहीं देखेंगे. Timings of their services. For example, bonus payable for the long-term service. I will plan from the day one, year 1, year 2, year 3, year 4. Should ideally be spread over 4 years. I'm giving you bonus. When I'm going to give you bonus, if you are my employee for more than 7 years, then I should divide my expenditure of bonus over 7 years. And this is the logic of this accounting standard. As per what you have understood till now, use some logic and answer the following question. When should the pension payable to the employees? During the service period or after service is completed?
And when Sir, should you after recognize the cost? When should you recognize the cost? sir, it is payable after the service is completed, and we will recognize the cost. सर कॉस्ट अभी करेंगे. हाँ, during the service period. जैसे वो तो अभी ठीक है. Yes. So till now you understood this. Payment I will make it after the service is completed, but expenditure I am going to record it over the period, that is during the service period. ठीक है? Logic clear, everyone? Yes. Now applicability. This applicable to level 1 enterprises, and now don't go it in detail. Level 2, level 3, level 4. In real, when you are going to do the practice, you will understand which paragraphs are applicable and which paragraphs are not applicable. See, many small organizations, they are not using this accounting standard. Level 4, it is not applicable. Okay. Meaning of employee. Now, who is employee? So I'm not going in detail. So employee includes the part-time, full-time, and casual and whole-time directors also. This standard is applicable to employer-employee relationship, and several factors you have to understand. There must be contract of service or contract for service. Contract of service means employer-employee relationship. And what is contract for service? What services I'm providing to Institute of Chartered Accountants of India? I'm providing my professional service. I'm not employee. Okay, so employee are different and professional service is different. So we are talking about employer-employee relationship over here. So there must be contract of service and not contract for service. Okay. तो contract for service में नहीं आएगा. An enterprise has no realistic alternative but to pay employee benefits on pay basis, historical pattern, make a provision, and no set pattern, then better do not make a provision. If you do not have any historical pattern, okay, so if there is no past evidence, so how you are going to make a provision? No need of provision. Okay, if there is some, based on some estimates, if you are doing this, then only you can make a provision. Otherwise, you'll do it. No need to make any provision. Whenever you are paying it, you will record it. Okay, but normally we will go by which option? Historical pattern, make a provision. ठीक है. Any doubt till now? नो सर. Okay. I'm not going in detail. What is the employer-employee relationship? So actually this is not needed. So you are aware about these things. ठीक है. Employee benefit includes. Now actual standard starts. Employee benefit includes शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. तो अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया एक बार समझ लीजिए. हिंदी में पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ. देखो हम लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो पढ़ रहे हैं, ये इतना ही ध्यान में रखो कि ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, वो आपको कुछ साल के बाद देने पड़ते हैं. वहां पे दिक्कत होती है. तो ये ऐसा तो नहीं है ये स्टैंडर्ड में सिर्फ सैलरी पे कर दिया और खत्म कर दिया. आप एम्प्लॉय के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, बिकॉज एम्प्लॉय यही तो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. टाटा जी हमेशा यही बोलते थे कि भाई हम नहीं ऑर्गेनाइजेशन चलाते, मेरा एम्प्लॉय स्ट्रांग रहेगा. तो टाटा जी ने हमेशा अपने एम्प्लॉय के बारे में बहुत सोचा हुआ है. तो सैलरी छोड़ के उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉय को देखा हुआ है. और वो जो बेनिफिट्स है ना, जो आप लोग पे कर रहे हो अभी, वो पे कब करते हो? उसके रिटायरमेंट के टाइम पे. और उसकी प्रोविजन आपको आज से करनी पड़ेगी. ये स्टैंडर्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट पे चल रहा है. ये एक्सपेंडिचर खत्म होने के बाद जब पेमेंट करेंगे तब देखेंगे भाई वैसा नहीं होता है. ये स्टैंडर्ड में पहले से आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. और वो कैलकुलेशन जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बेसिस पे हमें इसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो
लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे वही दिक्कतें आएगी। शॉर्ट टर्म बोले बहुत सिंपल है। वो क्वेश्चन ऐड किया क्या अपेंडिक्स वाला? करो ना अपेंडिक्स का क्वेश्चन। हाँ पहले वाला क्वेश्चन, दूसरा भी कर देना। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स विच इज पेबल विद इन 12 months, वो हमें देखना है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ सर्विसेज नॉट होनली विद इन 12 months। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मतलब विच आर नॉट पेबल विद इन 12 months, so that is also covered. I will give you examples, don't worry. Post employment benefits, that is after retirement, and termination benefits if you have decided to terminate any employee, or if he is taking any voluntary retirement service, so that is called as termination benefits. So that is long term, long term, long term. Three are long term and one is short term. Short term होगा तो no discounting. How you have to recall, there is no discounting. And long term होगा तो आपको discounting करना पड़ेगा. I hope कि अभी 2 महीने पे एग्जाम है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर सबको निकालने को आता है. Yes, anyone who doesn't know discounting factor, raise your hand. डिस्काउंटिंग किसको नहीं आता है? एक बंदा है लगता है इधर, रेज योर हैंड वाला. नहीं है ना? कोई नहीं है. चलो रेज योर हैंड. यस. तो डिस्काउंटिंग, चलो एक थैंक गॉड डिस्काउंटिंग ये सबको पता है. हाँ, एवरीवन इज क्लियर विद द डिस्काउंटिंग टेक्निक. अरिन जैन, बेटा डिस्काउंटिंग पता है ना आपको? चलिए नाउ आई थिंक देयर इज साइक्लोन. आज है क्या साइक्लोन? कौन से पार्ट में आया है इंडिया के? 2 मिनट ना, मैं यूट्यूब चालू कर रहा हूँ. यूट्यूब पे बराबर दिख रहा है क्या नहीं चेक कर लेता हूँ. ओके चले. So short-term employee benefits, what we are going to start with, short-term employee benefits. क्या आता है बेटा इसमें? कुछ याद आ रहा है आपको अशिता जी? Yes, sir. सर हाँ इसमें क्या? सैलरीज आएगा, वेजेस आएगा, फिर शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस था एंड बोनस थे, प्रॉफिट शेयरिंग. इसके लिए एक्चुअरी को बुलाएंगे क्या? नो सर. No, actuarial assumptions we not require, we don't require over here. No actuarial gains or losses. इस साइड साइक्लोन चल रहा है. यस. कोलकाता साइड हो रहा है क्या आशिता? नहीं ना? यस सर, क्लाउडी है पूरा, हो रहा है कोलकाता में. ओके. नाउ all short-term employee benefits, all short-term employee benefits, शॉर्ट टर्म एब्सेंसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मुन्ना. शॉर्ट टर्म एब्सेंसेस ये याद रखना हो. नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान. सो दिस स्टैंडर्ड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स लिखना है तो लिख लो. इट इज डिवाइडेड. मेन मेन की पॉइंट्स लिखो. ऑल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म एब्सेंसेस में एक्यूमुलेटिंग एंड नॉन एक्यूमुलेटिंग का क्वेश्चन आएगा. आपको याद है वो क्वेश्चन? एक्यूमुलेटिंग वर्सेस नॉन एक्यूमुलेटिंग, क्या भूल गए? सर थोड़ा थोड़ा भूल गई. ओके. एक्यूमुलेटिंग वर्सेस नॉन एक्यूमुलेटिंग याद रखो. एक्यूमुलेटिंग में वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग. नाउ हियर वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग इज डिफरेंट. Vesting and non-vesting is different. Vesting means what? सर Vesting वेस्टिंग means मीन्स here. प्रोविजन इज नॉट completed fully, means not No, here created it is fully. not the meaning. Here in accumulating, you cannot carry forward over here in next year. Whatever the absences, you cannot carry forward in the next year. Okay, that is lapse. And if you can carry forward, it is called as vesting. Non-vesting means you cannot carry forward. Got the concept? Yes sir. Hanji. Enterprise risk recognize these expenses based on the undiscounted amount. Okay, undiscounted amount. कौन सी amount बेटा? Undiscounted amount. Undiscounted amount. And difference between expenses recognized and cash payment should be recognized as
asset if advance is made and liability if you have to pay that. Okay, तो आपका कैश पेमेंट यदि आपने एडवांस में भर दिया तो इट इज एन एसेट फॉर यू, और आप बाद में देने वाले होगे तो इट इज लाइबिलिटी. ओके, ऑल बेनिफिट्स. नाउ शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस accumulating. Leave gets carried forward. Got the meaning? Yes, sir. Vesting, cash payments for unused entitlement on leaving the enterprise. And non-vesting means it will get lapse. You won't get any cash. Okay, remember, there is no distinction between vesting and non-vesting entitlement. मतलब क्या? मतलब you have to make a provision. भले इसका vesting हो या non-vesting हो. Today. And while measuring non-vesting entitlement, then you have to see the employee whether he is leaving your organization or not, because you are not aware today, no, whether he will leave or not leave. So you will make a provision, but you will reverse that provision if he leaves your organization. Got the concept? Yes, sir. आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देख बेटा, मैं आपको ये समझा रहा हूं. पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोल दिया कि तू 5 दिन साल भर में छुट्टी ले सकता है. हाउ मेनी डेज यू कैन टेक अ लीव? 5. 5 days. This is the opportunity given. But beta, due to workload, he has not taken any leave during this year. So, but obvious, his leave may get cancelled. Okay, means he won't get any benefit. He's not taking any leave, and I'm not giving him any extra payment if he's not taking any leave. So, what I told him, your leave I will carry forward in the next year. I will carry forward in the next year. And in next year, you can take extra leaves. Correct? समझ में आ रहा है? Yes, sir. For that extra leave, I have to pay from my pocket for next year. Yes, sir. Means indirectly, he is not coming, means I have to incur that cost. I have to pay salary for that leave also. During the year, I paid him proper salary. He has not taken any leave. But for that carried forward leaves, I planned for only 5 leaves, but he carried forward, assume 2 leaves. Then that 2 leaves I have to pay from my pocket. He will not come on those days. Yes, Correct? sir. Yes. So Correct. that 2 days, ultimately it's my cost. Because Yes. I planned only for 5 days leaves. And he will not come for 7 days. So 2 days is my cost, ultimately. Okay? Got it, sir. ध्यान में आ रहा है? And that cost, when should I record it? Logically, I should record it in the next year only. But ACE tells you to record it today. Got the concept? Yes, sir. Yes. So non-accumulating, इसका कोई टेंशन नहीं है. Leave will not get carried forward in the next year. But the problem is of, so no expenses, as there is no liability at the time of absences. But in case of, suppose 31st March 2025 to 31st March 2026, you have 100 employees and you sanction 5 leaves. Okay, that is official announcement. Okay, 5 leaves, we will sanction it apart from Sunday. Now, he has taken these leaves in 2026. Then there is no liability. But if he has not taken, he has not taken that leave, then beta, I have to estimate liability in current year itself for those leaves which have not taken. Assume on 31st of 2026, you continued with your 100 employees. And out of that 92 employees, they will take, we are making provision. This is the assumption. 92 employees will take 5 leaves. This is your expectation. Okay, so 5 leaves, वो तो उनका कोटा ही था 2026 का.
तो we don't have to provide any extra expenses. We are not giving any extra compensation to them for last year leaves. But 8 employees, they are taking 6.5 leaves. How many leaves? On an 6 point. average, 6.5 leaves. So tell me, then I have to make a provision for Sir, 1.5 leaves. 1.5 लीव्स. सी 5 लीव्स ये तो उसके करंट ईयर का हक था, पर ये जो है ना 1.5 लीव्स आई हैव टू एस्टिमेट. आई हैव टू एस्टिमेट. दरवाजा लावला नाही का बघ जरा, लावायला लाव त्याला. ओके. 1.5 फॉर पास्ट ईयर एस्टिमेट. ठीक है. सो 8 employees, 1.5 leaves, you are going to estimate that. Got the concept, beta? And Yes, when sir. you will make the provision for these employees in 31st March, on 31st March 2026 or on 31st March 2025? Sir, in the current year, 31st March 2025. हाँ. Future का, yes, you have to record it on 25, not in 26. You have to estimate that. कि कितने leaves वो लोग लेंगे. And how you are going to estimate? On past experience. Okay, तेरा sir. past experience only हमें ये समझ में आता है. Yes. Any difficulty till now? देखो भैया, एक बात समझ लीजिए, 2025 की जो लाइबिलिटी है वो हमें बनानी है. 2025 में उसको हमने हक दिया था 100 एम्प्लॉयज को कि तुम लोग 5 लीव्स लीजिए. नहीं लिए तो आपको नेक्स्ट ईयर तो लेने ही लेने हैं. एक ही साल का आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 1 साल. उसके बाद नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर लेवल एप्स हो जाएगा. ये हमने उनको एक टर्म रखा. अभी ये लोगों ने लीव्स नहीं लिए, कुछ एम्प्लॉयज लीव नहीं ले रहे. अभी जो एम्प्लॉयज नहीं ले रहे तो बड़ा ऑब्वियस उनकी लीव्स आगे कैरी फॉरवर्ड होगी. अभी जो लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट मंथ में वो लीव्स लेने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में, कितने 92 एम्प्लॉयज बोलेंगे भाई मुझे नहीं लीव चाहिए, नहीं चाहिए. वो 5 मैंने पिछले साल ही ले लिया था, 5 लीव्स तो इसी साल मैंने ले लिया, मैं तो वही उतना ही काम करता हूँ और लीव्स का पूरा आनंद उठाता हूँ. मैं ऐसा जाके वहां पे काम नहीं करता हूँ. एम्प्लॉय 2 टाइप के होते हैं. और कुछ एम्प्लॉयज बेटा होते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन घर पे रहने से अच्छा, वो बोलते हैं घर पे नहीं रहना है मुझे, बाहर जाके मैं काम करूँ, वो अच्छा है, घर पे ज्यादा सुकून यहाँ पे मिलेगा. होते मेरे जैसे एम्प्लॉयज. तो वो लोग क्या करेंगे, घर पे बैठने से अच्छा इधर जाएंगे. तो वो बोले पर ठीक है, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर कुछ इमरजेंसी आ गई. तो ये 8 एम्प्लॉयज ने 6.5 लीव्स ले लिए. तो 5 लीव्स तो करंट ईयर के अलाउड ही थे, पिछले साल के 1.5 लीव्स. तो ये कंपनी को तो 1.5 अपना जेब से पे करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, क्योंकि कंपनी ने सैंक्शन उनके हिसाब से 5 लीव्स का ही किया था. पर ये 1.5 कंपनी पे करेगी अपने जेब से, तो उसका जो भी खर्चा होगा ये उनको पिछले साल में ही प्रोविजन करनी है. ये एस्टिमेट है जिसका प्रोविजन पिछले साल में ही करना है. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट. यस. कुछ भी डाउट्स होंगे तो पूछ लीजिए. सर, ये पूरा नॉन वेस्टेड का कॉन्सेप्ट है ना? यस. ओके. नॉन वेस्टर्न मतलब क्या होगा, वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा वो अलग बात है. आपको प्रोविजन करना पड़ेगा. वेस्टिंग वो रहेगा फिर भी और नॉन वेस्टिंग रहेगा फिर भी. प्रोविजन दोनों का आज ही करना पड़ता है. अभी छोड़ के गए तो वो रिवर्स हो जाएगा. अभी अभी अपने को थोड़ी पता है यार एम्प्लॉय आएंगे क्या नहीं आएंगे, ये तो एस्टिमेट किया हुआ है. छोड़ के गए तो खत्म कर देंगे. एक्यूमुलेटिंग में आएगा ये. हाँ, सत्या इज आस्किंग एक्यूमुलेटिंग में, नॉन एक्यूमुलेटिंग में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखो. ओके सर. समझा? हाँ जी. प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान. अभी तो मैं मेन प्लान पे आया ही नहीं हूं. मेन प्लान तो मजा डीबीओ में आने वाला है. डीबीओ इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल आर वेटिंग फॉर डीबीओ. दिस इज वेरी सिंपल. प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान. स्टिल सम स्टूडेंट अंडरस्टूड इट नाउ प्रॉपरली कि हाँ ये प्रोविजन करना है. एग्जाम्पल in pictorial form, diagrammatic form, beta, in last PPT it was not there. We created it yesterday. That provision जो आपको अभी दिखा, estimate of 2026, we created it today, yesterday. So last session में नहीं था ऐसा, मतलब रेगुलर बैच में.
Recognition of expenses for the profit sharing and bonus plan would depend on the fulfillment of these conditions. Okay. Enterprise has present obligation to make such payment. So suppose if I'm giving you any profit sharing, okay, whatever profit I'm going to earn in during the year, it will get finalized on 30th September before annual general meeting. So before 30th September, and in AGM, yes, I will keep that books open for your all of my shareholders for their sanction or what they approved the correct word. So approval I will get it in the annual general meeting, and annual general meeting में after that, yes, my final profit actually board of directors ही finalize करते हैं. Only books are presented in the AGM. So you know the process. Now employee will get that bonus after AGM. So now tell me, वो बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग ये कौन से ईयर से रिलेटेड था बेटा? पिछले साल का. मिलेगा कब? नेक्स्ट ईयर में, आफ्टर अप्रूवल इन द एजीएम बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ टेल मी, should I record my expenditure in the current year or should I record as a provision on 31st March only? Sir, as a provision on 31st March. Bonus plan. It was my expenditure. I earned income. That's why I'm giving them profit sharing plan. Okay, so 31st March को ही मुझे provision करना पड़ेगा. And reliable estimate of the obligation can be made, and then you can make the provision. Example, I am announcing the profit sharing plan. If number of employees leaves during the year 3%, otherwise number नहीं है. No employees leave, I have to make a provision of 3%. And suppose meanwhile if some employees leave my organization, तो मुझे profit कम share करना पड़ेगा ना बेटा. तो मुझे कितना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा? 2.5. दैट एस्टिमेट आई हैव टू मेक. Yes. Though I am not legally obliged to pay the bonus, but there is a tradition to pay bonus. तो बेटा मैं बोनस रिकॉर्ड करूंगा ना एज एन एक्सपेंडिचर. गॉट द कॉन्सेप्ट? So though it is not legally applicable, but traditionally if applicable, then it is called as I'm going to record it. Even in AS29, we record this provision. Okay, in AS29 we record it as a provision. AS29 also talks about that. Okay, तो आपका जो कस्टमरी आप पे कर रहे हो, मतलब बाय ट्रेडिशन इफ यू आर पेइंग इट, देन बेटा यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर एक्सपेंडिचर. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर. क्या क्या नया समझा? सर फर्स्ट तो शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस जो है उसमें दो टाइप्स में डिवाइड हो गया, एक्यूमुलेटेड और नॉन एक्यूमुलेटेड. जो नॉन एक्यूमुलेटेड है उसके लीव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, इसलिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा. और जो एक्यूमुलेटेड है उसमें भी दो काइंड है, एक है वेस्टेड एंड दूसरा है नॉन वेस्टेड. फिर जो इसका प्रोविजन जो है वो हम आज रिकॉर्ड करेंगे, एस्टिमेट द लाइबिलिटी इन द करेंट ईयर. एंड उसके बाद फिर प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स था, उसमें वेस्टेड और नॉन हिस्टोरिक वेस्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये ध्यान में रखो. प्रोविजन कर दी है, नॉन वेस्टेड हो गए तो डोंट पे कैश, रिवर्स योर एक्सपेंडिचर विच यू हैव मेड द प्रोविजन, तो वो इनकम दिखेगा नेक्स्ट ईयर में. एंड सपोज वेस्टेड हो गया तो बेटा फिर यू हैव टू पे कैश, पर एक्सपेंडिचर यू हैव टू बुक इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ. समझ में आया ना? मतलब नॉन वेस्टेड है तो छुट्टी के बदले हम लोग उन लोग को लीव ही देते हैं. नहीं 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 नहीं, सपोज वो नॉन वेस्टेड कब होगा? वो यदि छोड़ के चले गए. ओके, वो 8 एम्प्लॉयज का आपने जो प्रोविजन किया था और आपको लोगों ने छोड़ दिया, या हो सकता है ज्यादा एम्प्लॉयज भी हो गए, तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय मतलब पास सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड होता है वो. तो पिछले वो एक्स्ट्रा प्रोविजन फिर जब जिस दिन, अभी अपने को थोड़ी पता है कि कौन छोड़ रहेगा या कौन छोड़ेगा. हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि 8 एम्प्लॉयज हमारे पास जाने की संभावना है कि नहीं, वो एक्स्ट्रा लीव लेने की संभावना है. अभी जाएंगे तो उनको थोड़ी हम लोग सैंक्शन देंगे. वो फिर आया समझ में? तो वो नॉन वेस्टेड होगा, पर वो अपने को पता थोड़ी है कौन छोड़ेगा और कौन नहीं छोड़ेगा, तो उसकी प्रोविजन पहले ही दिन पे करके रखनी है, ये बोला जा रहा है. तो वेस्टेड या नॉन वेस्टेड होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजन करनी है. हाँ, सिर्फ रिवर्सल एंट्री या पेमेंट एंट्री ये बाद में डिसाइड होगा. रिवर्सल एंट्री इफ नॉन वेस्टेड, इफ पेमेंट एंट्री इफ वेस्टेड. गॉट इट सर. हाँ ठीक है. नेक्स्ट, फिर प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस प्लान हमने देखा. भले बोनस आप बाद में पे करते रहोगे तो भी प्रोविजन 31 मार्च को ही करनी है.
कोई शक सवाल अभी तक? Anyone has doubt in short term? Otherwise, I will move to very important session, that is a post employment, because ये minimum 45 minutes to 50 minutes understanding के लिए लेगा. And after that बेटा we are going to solve some question. शॉर्ट टर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो हाथ रेस कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए. आज लग रहा है एकदम सिंपल लैंग्वेज में हो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आशिता जी. यस सर, आज जाके समझ आया. चलो बहुत बढ़िया. एवरी वन ऑफ यू, आई होप नाउ दिस स्टैंडर्ड इज वेरी इजी फॉर यू. When I studied this accounting standard from my sir, means it is in 2006 something. This standard was very new at that time, and I remember he appointed one PwC manager, and he explained us that part of all these benefits and all, and that was very technical session. And it, as a student, it is very difficult to understand this technical language. For him, it was very simple. But for students, it's very difficult to understand that PUCM method, projected unit cost method. That is this is very difficult. What is current service cost, past service cost, how it is going to recognize, what is plan asset. So we will use very simple terms for post-employment benefits also. And we are going to solve one question which is from the appendix part of this bare text, AS15. If you are able to understand that question, then this chapter is very simple for you. तो मैं winner बनूंगा. Yes, I explained everything in very detail. Yadi you can able to answer the question of appendix. Okay, चलिए, so start करते हैं अभी. Now, please, I want 100% focus. All thoughts remove from mind. Extra thoughts. अभी full focus on these terms. Okay, because एक भी line miss हुआ, सब जाएगा. Don't miss a single sentence. Ready? Everyone? Post-employment benefits. Defined contribution plan and defined benefit plan. What is contribution? See the word contribution. Contribution, why we are doing? Because post-employment. See the logic. Post-employment. जब रिटायर होंगे. So for your benefit, suppose Ashita is my employee, and for her benefit, I am contributing every year some amount in some asset, plan asset. Asset means where I'm investing. Whatever the percentage of the salary. If Ashita wants to contribute in that fund, it is open. So it's like you are already aware about this in income tax. Provident fund होता है. भविष्य के लिए जो आपका निधि होता है, इसका नाम है भविष्य निर्वाह निधि. आपका भविष्य एम्प्लॉयर के हाथ में है, उसका भविष्य आपके हाथ में है, एम्प्लॉय के हाथ में. आप अच्छा काम करोगे, कंपनी की तरक्की होगी, कंपनी की तरक्की होगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है. इसीलिए दोनों भी कुछ फंड्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ सैलरी के परसेंटेज या फिक्स अमाउंट. ओके, इट इज डिपेंडिंग. सो whatever amount you are paying in that fund, fixed contribution is there. So मुझे कुछ एक्स्ट्रा टेंशन की जरूरत है क्या आशिता? नो सर. कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे टेंशन ही नहीं है. मैंने तुझे ये कुछ वादा ही नहीं किया कि तेरी जो सैलरी होगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसका इतना पैसा मैं तुझे पे करूंगा ना. मैंने कोई वादा किया नहीं है. मैं तुझे बोल रहा हूं, तेरा जो भी सैलरी होगा, इसका 5% मैं फंड में डालूंगा. आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्ट एश्योरेंस
that you will get salary after 35 years ka whatever the salary, based on that whatever number of years of completed multiply karunga and you will get that amount, last drawn salary for that year multiplied by number of years of completed. ऐसा कोई एश्योरेंस दिया है मैंने आपको? नहीं सर. So this is called as defined contribution plan. You got the difference between two? And if I'm giving you assurance that last drawn salary ka itna amount I will pay you, it is called as defined benefit plan. Now there are two risks. One, actuarial risk. Now what is actuarial risk? We will see it. Two words you have to understand. And second one, investment risk also. Suppose if I'm investing it in that any fund that in plan asset, and if I'm not getting the proper returns, oh, that risk is also with me. It is called as investment risk. So how many risks are there? 2. Two. One is Actuarial risk and actuarial risk. investment risk. And second one is investment risk. Whether these risks are part of discipline plan, Yes sir. DCP, defined No sir, contribution plan. DBP. DBP. Better please see the word contribution plan and the benefit plan. Contribution means employer is contributing. He is not thinking of any benefit of the employee. Only the contribution is doing. सिंपल भाषा में बोलना है ना बेटा. देखो, आपके इधर गणपति बैठता है क्या बेटा? Yes sir. अच्छा, अभी गणपति में क्या होता है, एक डोनेशन लिया जाता है हर घर से, या आपके इधर देवी के टाइम पे होता रहेगा कोलकाता sir. में, तो आप देते हो ना, क्या बोलते हो उसको? देनगी बोलते हैं ना आपके इधर, सर वर्गणी बोलते हो, चंदा. चंदा बोलते हो. चलो ठीक है. अभी बेटा ये चंदा वो बिल्डिंग के हर आदमी के पास आएंगे. कुछ लोग रहते, Yes sir. ओके, सोसाइटी में रहते रहोगे और वो आपके पास आके, वो हमारे इधर मंडल बोलते हैं उसको, आपके इधर क्या बोलते हैं? देवी का वो मतलब हर वो एरिया के देवी का जो एरिया में बिठाया जाता है, तो उसको आपके इधर कुछ तो बोलते रहेंगे. Yes sir. हाँ, तो बेटा हर वो उतने एरिया के लोग आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आते रहेंगे. Yes sir. बराबर घर घर पे. आप 100 रुपया देते हो. कितना रुपया देते हो आप? सर 500. 500 रुपीज आप दे देते हो. अभी वो उसमें डीजे लगाओ, खाना दो, जो करना है वो करो. आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं सर. वहां पे जो भी भीड़ लाने लाओ, किसी प्रोग्राम करने हैं, किसी को बुलाया वहां पे, हमें कोई लेना देना नहीं. शान को बुलाओ, या वो आपके इधर कोलकाता के कौन वो गाने वाले का नाम मैं भूल गया, क्या नाम है, तो यस, तो इनको आपने बुलाया. हमें रानू मंडल को बुलाना है, चलो बुलाओ. हाँ, तो यस, ये जो है ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने कंट्रीब्यूट कर दिया. पर सपोज तो उनके कमिटी में है और जो भी शॉर्ट अमाउंट होती है ये चंदे की, वो आपको देनी है, तो ये कौन सा प्लान होगा? फिर रिस्क किसमें ज्यादा है? सेकंड वाले में. हाँ, तो ये बेनिफिट प्लान है. कंट्रीब्यूशन में टेंशन ही नहीं, कंट्रीब्यूट कर दो, खत्म. कंट्रीब्यूशन के बाद टेंशन कब होगा? इफ इट इज अ बेनिफिट प्लान. फिर उसमें कम ज्यादा जो भी रिस्क होगी, वो जो चंदा कलेक्ट कर रहे उनके ऊपर रहती है. वो लोग फिर कहां से खुद के जेब से भी डाल सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिट प्लान. नाउ यू आर क्लियर विथ टू कॉन्सेप्ट्स? यस सर. यस. एग्जाम्पल इज ग्रेचुइटी. ग्रेचुइटी टैक्स में पड़ा हुआ है. यस. नाउ विच इज सिंपल अकाउंटिंग? DCP. DCP. What will be the entry?
You only tell me entry. Sir, DCP is the liability. So, 2 DCP. So employee benefit expenses. I will Yes, record sir. expenses to any amount which I contributed. I promised to contribute 5,000 rupees. Actually, I'm not paying it now. So to provident fund payable. Whatever amount I contributed, I will record it as expenses. Very simple. Correct? Eh? Yes, sir. Then P&L account debit to employee benefit expenses. And whenever I'm paying it in that fund, provident fund payable account debit to bank. There is no discounting. There is nothing. Whatever contribution you are making, you will record it as expenses. An employee will get that amount which will be accumulated, and at the end of the retirement, at the time of the retirement, he will get this amount. Okay? Yes, sir. So any difficulty in recording this account? No, sir. No, not at all. Second one. How many risks are there now? How many risks I explained? The 2 risk, One is actuarial and actuarial investment. investment. Now, what is actuarial risk? You can write these points. Huh? These risks are in DCP or DBP? DBP. DBP. Actuarial means what? Do you have idea? What is actual risk? Any one of you? Benefits which we are paying, it might happen. Benefits which I'm going to pay are less than expected benefits. Whatever I'm contributing, and at that time, whatever benefits is we are going to incur. Now these are less. Whatever I contributed in that defined benefit obligation account. And at that time, if your salary is more, so you will get more gratuity. That risk is always there. So that is the actuarial risk, benefits paid. And what is investment risk? Yes, Ashita? Yes, sir. Not getting proper returns, what we expected. Returns, whatever the actual amount you invested is less than whatever amount I have to pay in the future. I invested that amount. Every year, I will get these returns. And after that, when it is a time to pay that person at the time of retirement, my investment amount is less than what benefit I have to pay. So this is also risk. It is called as investment risk. So how many risks are there? 2 risks. Like actuarial risk and one is investment risk. Clear with the concept? Yes, sir. Yes. So 2 रिस्क है जो दोनों मुझे समझ में आ गए. Now, how many plans are there? In StudyMath, it is given in only one chart. ये पिछले बैच में लिया नहीं था. Types of plans. Number 1, multi-employer plans. See, ultimately, you have to just check whether risk is on employee. Then it is what is called as employee के ऊपर risk होगा तो DCP contribution plan and employer के ऊपर होगा तो DBP. ठीक है? So employee risk DCP, employer risk DBP. But you should understand plans. कौन से टाइप के plans आते हैं? Multi-employer plan. Now what is this? Yes, we'll see. Group administration plan, risk sharing plan, state plans, and insured benefits plans. बेयर टेक्स्ट में सब प्लान्स दिए हैं. अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू फोकस, डीसीपी एंड डीबीपी. अकाउंटिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट इंस्टीट्यूट आस्क यू, sorry, they won't ask you this type of plans, but it is mentioned that there are different types of plans
Whether we need this in detail, no, not at all, but just only for general knowledge. What are the types of plans? Multi-employer plans. क्या लगता है तुझे? What is multi-employer plan? Sir, a plan for a lot of employees, multiple Many employees. employers. See, I will give you one example. So it will be very clear for you. See, there are group of small restaurants. They realize that individually providing a retirement plan for their employees is expensive. मतलब ये सपोज आप हो, मैं हूं, अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स है. एग्जाम्पल, if Adnan is there, Ayushi is there, Anmol, they are all employers and they have different employees. ओके तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. सो व्हाट वी डिसाइडेड, हम साथ में आए एंड वी शेयर्ड फंड्स. हमने इकट्ठा पैसा लाया. ओके 3 रेस्टोरेंट वालों ने इकट्ठा पैसा लाया. फॉर व्हाई वी आर sharing these funds? Because we want to give amount to our employees at the time of retirement. And we shared funds. All assets we pull together, contribute a fixed amount to the shared funds, and employees from all those restaurants will receive this benefit. We come together. Our employees are different. Employers are also different. But they come together. Why they come together? Because they want to pull their assets. Suppose now, if any employer is unable to contribute, and if risk is with other employers, in that case, that is called as defined benefit obligation. And if any employer fails to pay, but his liability is not on other employers, then that is called as DCP plan. Got the concept? Easy, eh? If it is on employee, DCP, on employer, DBP. Khatam. Group administration plan. A group administration plan is merely a single employer plans combined to allow different employers. It might happen that your statute or your state means आपका राज्य, उन्होंने कुछ प्लान बताया है कि हम लोग आपके इन्वेस्टमेंट का केयर लेंगे. You employer have to give money to us and we will return it after certain years. Okay. तो इसका फायदा क्या होगा बेटा आशिता? Yes, sir. क्या फायदा होगा ये प्लान का? सर बेनिफिट मिलेगा ना प्लान में. सर क्या समझी नहीं. बेनिफिट? हाँ सर क्वेश्चन समझ नहीं आया. अरे ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन प्लान में क्या होता है, एक फंड में सभी एम्प्लॉयर्स आके वहां पे, जो भी एम्प्लॉयर को आना है वो एम्प्लॉयर आके वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है. इसका फायदा क्या होता है कि आपका खर्चा बच जाता है ना. आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कहां करना है, किधर करना है, दैट फंड विल टेक केयर. आया समझ में? So Yes, that sir. group administrator will take care, no? Employer has just to contribute over it. Okay? Yes, sir. हाँ, ये ध्यान में रखना. Risk sharing plan. Now, what is risk sharing plan? Now, one enterprise having the common control will share risk. See, this is not multi-employer plan. Huh? Common control मतलब होल्डिंग के एम्प्लॉइज, सब्सिडरी के एम्प्लॉइज, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट इन वन फंड. इट इज कॉल्ड एज रिस्क शेयरिंग प्लान. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. स्टेट प्लान्स.
जो लेजिस्लेशन से कवर होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है या आपका राज्य का गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, तो उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स। एनी डिफिकल्टी? नो सर। सर इसका कोई हमें महत्व है क्या? नहीं बेटा, ओनली फॉर जनरल नॉलेज। Arun ji, this is not out of syllabus. Actually, you have one paragraph on this. You can check it on page number. कौन सा चेक करो बेटा? स्टडी मैट ही ओपन नहीं करते क्या? वेरी गुड। एक पेज में एक लाइन में दिया हुआ है सिर्फ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा ये, ओनली फॉर जनरल नॉलेज, याद रखो आप लोग। इंश्योरेंस प्रीमियम टू फंड्स, और आप इंश्योरेंस प्रीमियम को ये कर रहे हो, ठीक है, चलो छोड़ दीजिए। यस, सो इंश्योरेंस बेनिफिट मीन्स मेडिक्लेम वगैरह, या कोई मर जाता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस बेनिफिट प्लान्स। अभी मेन चीज पे आओ। 5 to 7 minutes I spent on that explanation actually. Okay, and there is also one MCQ related to this. In study mat you have one question. Yes, beta Ritu, very good. And now you can solve that MCQ very easily. बराबर है रितु? ये प्लान का डायग्राम दिया हुआ है शायद से, कहीं तो दिया है। एनी वन ऑफ यू पेज नंबर बता सकते हो मुझे? ओनली डायग्राम इज गिवन, नो एक्सप्लेनेशन आई थिंक। 6.12 चेक करो। यस सर। है ना डायग्राम? यस सर, डायग्राम है। हाँ, फिर आपके मन में डाउट नहीं आया ये डायग्राम का मीनिंग क्या है? सर बट चलो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ ठीक है, अभी हो गया क्या एक्सप्लेनेशन आपको? यस सर। सी, अकाउंटिंग वाइज इज इंपॉर्टेंट, थियोरी ठीक है, कॉमन सेंस था वो। डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन, क्या क्या टर्म्स पता है आपको इसमें से? बेनिफिट ऑब्लिगेशन में क्या क्या एंट्रीज होती है, कुछ आइडिया आपको? सर इसमें कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, फिर एक्यूमुलेटेड बेनिफिट्स होगा, देन प्रेजेंट वैल्यू को रिवर्स करके लेना होगा। तो ये सब टर्म्स था। DBO is the present value of the obligation of an employer to its employees for post employment employee benefit, PEEB. It is the present value of the obligation. सर एक बार क्लियर करो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मस्त एग्जांपल देता हूं आपको। इलस्ट्रेशन 9 जो है ना, इलस्ट्रेशन 9 में आपको ये वर्डिंग समझ में आएंगे। An employee Roshan has joined my company in 2021, और 2001 में लेते हैं हम लोग, चलो। The annual emoluments of Roshan is decided 14,90,000 to 10. The company has policy of giving lump sum payment of 25% of last drawn annual salary, 25% उसका, for
each completed year of service. After completing minimum 5 years, salary is going to increase by 10% every year. The company has inducted Roshan in the beginning of the year, and it is expected that he will complete minimum 5 years before his retirement. So, beta, what is my obligation? Can you tell me? What is his last drawn salary, my dear? कैलसी ला रहे बाहर से? 90,210. ये लास्ट ड्रॉन सैलरी है? नहीं सर, ये एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर का तो अभी सैलरी है. आपको मैंने पूछा कि क्या मतलब 25% ऑफ व्हाट? ओ लास्ट वन. सर 24 लाख. $30 lakhs is the total obligation. करेक्ट है? यस सर. $30 lakhs is my obligation, not present value. Now see, so you got the concept of what is the amount that I have to pay after 5 years? That is at the time of retirement 30 lakhs मुझे पे करना है बेटा. देखो आज यस जो सर. सैलरी उसमें 10% बढ़ाया, उसका 25% लिया और 5 साल कंप्लीट हुए तो उसको 5 साल से मल्टीप्लाई किया. लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब 10% से बढ़ा के. देखो लीजिए कैलसी पे एक बार वापस. 14,90,210 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%. सो व्हाट इज हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी? 5 बार किया 23,99,998 ऐसा कुछ तो आ रहा है. दैट इज 24 lakhs. उसका 25% कीजिए. 6 लाख. 6 लाख ऐसे 5 साल उसके कंप्लीट हुए तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा बेटा? 30 lakhs. हाँ, तो इसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. वेदर इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू, नॉट एट ऑल. Now how to calculate the present value of this? Abhi some students will calculate, sir, present value is equal to, what is the discounting factor? 8%. When you have to pay 30 lakhs after 5 years na beta, यस सर. divided by 8% is the discounting rate for 5 years. Correct? So 30 lakhs divided by 1.08. 1, 2, 3, 4, 5. So my present value is 20 lakh 41,750. Say yes or no? यस सर. This is not the correct calculation. 20 lakh, I think 41,749.59 you are getting. This is not the correct calculation. What we are doing? PUC method, projected unit cost method we are using. How we are using this? Now, how many years after how many years you have to pay this amount? 5 years. So after 5 years, you have to pay this amount. Okay. So every year you will calculate projected unit cost, every year cost. Unit means every year cost. So what is my every year cost? 6. 6 lakhs. Correct है? समझी Yes, sir. गई? Okay. Now
I am at the end of the first year. I will make every year. I want 30 lakhs at the end. How much I want at the end? 30 lakhs. 30 lakhs. So my present value of this 6 lakhs. See, now this 6 lakhs I will collect after 4 years from the how much I have to invest if I want at the end of the year 1. Sorry, at the end of the year 5, 6 lakhs. How much amount should I invest today? Today means at the end of year 1. Here, year 2, 3, 4, 5. So if I want 6 lakhs at the end of the year 5, and I am at the end of year 5, I have to invest 1. My discounting factor is 1. See, this is a different calculation, dear. ये 1 लाख है. तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज? 6 lakhs. I want amount at the end of the 5th year 6 lakhs. I am standing at the end of the 4th year. So I want this 6 lakhs after 1 year. Yes. After 1 year, I want 6 lakhs rupees. Then what is the investment amount? 0.926. Okay, so I will take a discounting factor of 1 year only. I will take discounting factor. So tell me, I want 6 lakhs when I want? At the end of 5th year. Third year. 5th year, not 3rd year. Yes, sir. And I am standing at the end of 3rd year. So when should I get the amount? After Sir, 2 I want years. Yes, sir. After 2 years. So I will take the discounting factor of 2 years. 2 years. 857. I want 6 lakhs at the end of 5th year. I am at the end of 2nd year. So, yes, I will take the discounting factor of 0.794. And lastly, I will take the discounting factor of 4, that is 79735. This is very important, beta. Students are making mistake. 1 रुपया उनको कब मिलेगा? सॉरी, ये 6 lakhs 5th ईयर के लिए आप लोग 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 0 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये 0 ईयर का डिस्काउंटिंग, ये 1 ईयर, ये 2 years, ये 3 years, and this is 4 years. Projected unit cost method. Every year you will count 6 lakhs, 6 lakhs, 6 lakhs, 6 lakhs, 6 lakhs. At the end, you will get 30 lakhs. All these 6 lakhs are at the end of the 5th year. But every year, you have to do this accounting. Okay. Now, this multiplication is called as, you will record every year. This is called as current service cost. This multiplication is called as current service cost. Are you getting this point? Yes, देखो sir. बेटा, मैं वापस से एक बार बोलता हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा. मुझे ये सभी 6 लाख कब चाहिए बेटा? At the end of 5th year. At the end of the 5th year. सिर्फ मुझे हर साल डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. पहले साल के लिए मुझे कितने साल का सोचना पड़ेगा? 5 years. 4 years, because I am at the end of first year. लिखा ना बेटा मैंने इधर 4 years.
सेकंड ईयर पे मुझे कितने साल का सोचना पड़ेगा? 3 3 years. years. So these are my present values and this is my future value. And when I will take a total of this, it is called as present value of defined benefit obligation. So multiply करके you will get this amount. How much? 4,41,000. 4 lakh, believe me, ये करेक्ट आंसर है. सो ये अमाउंट हमें मिलेंगे. अभी समझ में आया यस सर, आ गया. कहां पे गड़बड़ हुआ था? बच्चों को क्या लगता है 6 lakhs? आई एम गेटिंग दिस 6 lakhs at the end of the year 1. No, I will get this 6 lakhs at the end of year 5 and I will invest at the year end 1. At the year end 1, I will invest. Okay. And this is I am getting at the end of year 5. And this discounting is called as 4,41,000 as a current service cost. What entry you are going to pass beta for this 4,41,000? सर Yes. करेंट कॉस्ट डेबिट टू डीबीओ. Very good beta. Current service cost account debit to DBO. कितना अमाउंट आएगा? 4,41,000. 41,000. Now if I take this total, what is the total of this beta? Actually, we don't have to do this total. Just explaining you for conceptual clarity. 25,87,200 is the total. And how much is my obligation? 30 lakhs. 30 lakhs. So that extra amount which I paid, what it's called as? Interest cost. And this interest cost, how much is the interest cost? 4,12,800. 12,800 is my interest cost. And this interest cost, I will divide over 5 years. Okay, this interest cost is also I divide over 5 years. And what will be the entry beta for this interest cost? Sir, interest cost debit to DBO. DBO, interest cost account debit to DBO. Correct. So, this table I have to prepare. At the beginning, I'm not investing, it means I'm not incurring any cost. 8%. I will incur at the end, no, year 1 ke end mein. So whether there is any interest for the first year? No, sir. No. 4,41,000. 4,41,000 पे कितना interest आएगा बेटा? What is the discounting rate? 8%. 8%. Add किया. Sorry, ये second year का, ये ऊपर से copy paste किया. Okay? ये प्लस ये इज इक्वल टू ये. फिर ये आ जाएगा इधर, इसके ऊपर 8% प्लस ये इधर आ जाएगा, प्लस ये इज इक्वल टू आ जाएगा, प्लस ये लास्ट में 30 लाख चाहिए, ये अमाउंट है. तो नॉर्मली लास्ट इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बैलेंसिंग फिगर लेना, लास्ट वाला बैलेंसिंग फिगर. गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर. यस. सो ऐसे एंट्रीज किया तो मेरे हर साल पी एंड एल में ये अमाउंट जाएगा, ये पी एंड एल में जाएगा, और ये मेरी लाइबिलिटी हर साल दिखने वाली है बैलेंस शीट में. ये पांचों लास्ट में कितनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखेगी? 30 लाख. एनीवन हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस अकाउंटिंग? रेज योर हैंड कि सर मुझे कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आया.
एनी वन हैज डिफिकल्टी? हाँ जी बोलिए। भैया देखो, 30 लाख रुपया मुझे कब चाहिए? लास्ट में। तो मुझे हर साल कितने की लाइबिलिटी इनकर करनी है? 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। ये मैंने लाइबिलिटी हर साल इनकर किया। तो पहले साल के एंड में 6 लाख मुझे इनकर करना है। सेकंड ईयर के एंड में मुझे 6 लाख। और ये सभी अमाउंट मुझे कब पे करनी है? हाँ, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड यूनिट कॉस्ट मेथड। ये समझा? अब ये 6 लाख मुझे चाहिए 5 साल बाद, और मैं कहां पे खड़ा हूं? फर्स्ट ईयर के एंड में। तो मुझे ये 6 लाख, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, और मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। मैं ये सभी मेरे फिफ्थ ईयर के, ये मेरा एंड ऑफ द ईयर है। मैं इधर खड़ा हूं एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और मुझे चाहिए 6 साल बाद, 5 साल बाद 6 लाख रुपया। तो हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टुडे? तो इसके लिए मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। ये तो सही है। अभी आप कौन से ईयर के एंड में हो? फर्स्ट ईयर के एंड में हो, और आपको पहुंचना कहां पे है? फिफ्थ ईयर। मतलब कितने साल बचे? 4 साल। तो 4 साल से मैं ये डिवाइड करूंगा। इधर मैं कितने साल से डिवाइड करूं? 3 साल। इधर मैं कितने साल से डिवाइड करूं? ये 1, 0। अभी ये फैक्टर इंस्टीट्यूट ने खुद ने दिए हुए हैं रिवर्स कैलकुलेशन में। इंस्टीट्यूट इतनी अच्छी है कि उन्होंने रिवर्स में ही पूरा दे दिया है। एक्चुअली आपने कभी डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए रहेंगे तो वो 1 से शुरू होते हैं, पर इधर इंस्टीट्यूट ने रिवर्स करके दिया हुआ है। तो हमने आपको थाली में परोस के दिया हुआ है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली देखने गए तो हम लोग नॉर्मली एफएम में रिवर्स देते हैं, 1.926, फिर कितना 0.857, बोलिए आगे, 794.735। अभी मल्टीप्लीकेशन तो आपको आ जाएगा। यस। अब ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाले। अभी प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये मेरा खर्चा में बताऊंगा, एक्सपेंसेस। अभी इनकी टोटल कुछ तो 25 लाख समथिंग आ रही है, और मुझे पे कितना करना है? 30 लाख। ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते इंटरेस्ट। आया समझ में? अभी मेरी शुरुआत में कहां से करूंगा? तो करंट सर्विस कॉस्ट से मैं ये पी एंड एल में रिकॉर्ड करना। अभी मुझे 30 लाख रुपया एंड में दिखना चाहिए, मेरा ऑब्लिगेशन एट द एंड। हर साल का इंटरेस्ट और ऑब्लिगेशन एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में 0 था, तो इंटरेस्ट मेरा 8% से 0 ही आएगा। अब ये करंट सर्विस कॉस्ट जो है वो मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। 4,41,000 जो मैंने ऊपर निकाले ना, ये पूरा का पूरा इधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। बराबर। तो अभी ये 4,40,000, तो यही अमाउंट इधर आएगी, यही अमाउंट 441 इधर आएगी। इसके ऊपर मैं 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। करंट सर्विस कॉस्ट मैंने ऊपर से नीचे लिया है, ये ऐड करूंगा, तब जाके मेरा ये ऑब्लिगेशन आएगा 2 साल का। और एंड में मेरा ऑब्लिगेशन करेक्ट है, कैसे समझेगा? हाँ, ये मेरा 30 लाख रुपीज रहेगा, तो ये मेरा ऑब्लिगेशन रहेगा। अब ये 30 लाख लाने के लिए ये जो मेथड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टेड यूनिट।
बहुत बढ़िया लिंक लगा था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कंटिन्यू। ठीक है। यस एवरीवन, कशिश जी। कशिश बेटा, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बढ़िया लिंक लगा था आपका। हाँ सर। ओके, चलिए कहाँ पे थे हम लोग लास्ट में? सर हम इलस्ट्रेशन 9 में थे जब हम इंटरेस्ट ओके, निकालने के बाद एंट्रीज बता so रहे थे। now you got these entries. Can you tell me यस सर। entries? अच्छा, what are the यस key terms that you understood now? सर, वेस्टेड, नॉन वेस्टेड, एक्यूमुलेटिंग एंड No, नॉन no, 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 no. For एक्यूमुलेटिंग। DBO, DBO. और सर करेंट सर्विस कॉस्ट एंड पीवी Present value ऑफ। of obligation, you understood? यस What is my present value of the obligation? Something 25 lakhs. And 25 every लाख year we are 87,000 calculating सर। that. Correct? यस यस सर। Then actual assumptions yet not cleared. Okay, so actual assumptions हम लोग देखेंगे बेटा. Then some components you understood of defined benefit obligation. Number one, benefits which we paid. We have to see that what benefits we paid. We will see some problems. Actual payments will done. Service cost. Yes, beta. It is divided in past service cost and current service cost. What we recorded is, Kashish, current service cost था या past service cost था? करेंट सर्विस कॉस्ट था। What do you think? What is past service cost? सर मतलब पास्ट ईयर का सर्विस का। देखो बेटा, what is the salary that you expected at the end 24 of लाख। the? It might happen that you consider every year 10% salary यस सर। extra, but यस सर। you performed very well and therefore you got 12% hike. Got the concept? यस सर। Now you have to recalculate now expenditure. So your liability is not 30 lakhs now, it will get increase. यस सर। And it might happen that your first year current service cost, what you provided is 4,41,000. But as यस per सर। calculation now, new calculation, it comes to 4,70,000 यस सर। for first year. And you realize that in the year 4. So now, are you able to revise your first year books? ये पीछे जाके चेंज कर सकते हो क्या? यस सर। अच्छा, मतलब आप फर्स्ट ईयर के इसमें नहीं जाके नहीं नहीं फोर्थ ईयर के बुक्स चेंज करोगे, नहीं फोर्थ ईयर में फर्स्ट ईयर के बुक्स चेंज करोगे? अलाउ होता है क्या नहीं। ऐसा, फर्स्ट ईयर के बुक्स को वापस से एक बार बुक्स आर क्लोज्ड? लॉ में पढ़ा होगा ना आपने, हाँ सर, मैं बुक्स आप। फैक्ट पे देखा देखिए। ऐसा क्या सोच रहे हो आप? तो आपको फोर्थ ईयर में अभी फर्स्ट ईयर की एंट्री करनी पड़ेगी। यस सर। तो ये करंट सर्विस कॉस्ट होगा या पास्ट सर्विस कॉस्ट होगा? पास्ट सर्विस कॉस्ट। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज पास्ट सर्विस कॉस्ट. यस सर। Past service cost means you realized it in the year 4, but यस expenditure you should record in the year 1. हमारे इधर इंटरनेट का एकदम से ये बंद हो गया, सो सॉरी, मेरा लिंक आप लोगों का टूट गया उसके वजह से, बट अभी आप वापस से फ्लो में आ जाइए. So past service cost is called as, and now there are again two parts, recognized and unrecognized. Now I put some condition on my employee. If
you are with me for next 5 years, then only you are eligible for retirement benefit. So what is the condition beta that I put? कहाँ गई कशिश? अनम्यूट क्यों करना बेटा? हाँ सॉरी सर, वो बैकग्राउंड में डिस्टर्बिंग था तो बस। हाँ। फिर आशिता को बोलूं क्या या गया नहीं बैकग्राउंड नहीं का? सर, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, ओके। तो बोलिए बेटा, यस सर। क्या बताया मैंने? Why I am yes, what is the condition that I put? If you are with me for 5 years, then you will get the benefit after at the time of retirement. समझ में आ रहा है कि आपको? यस सर। हाँ, सो आपको तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप मेरे साथ 5 साल हो। यस सर। भले आप 30 साल के बाद रिटायर होंगे, पर मुझे तो आपकी कंडीशन है 5 साल के बाद, मिनिमम 5 इयर्स रहना चाहिए मिनिमम था 5 years। तो कौन से एम्प्लॉइज जिनको मुझे कंपल्सरी पेमेंट करना है? सर। जो 5 इयर्स से ज्यादा रहे, मतलब Very 5 good. इयर्स या So 5 इयर्स से I have ज्यादा to है। pay those employees who are with me for more than 5 years. यस सर। But tell me, those employees are with me for only 2 to 3 years. For those employees, whether I'm going to do provision or not, सर प्रोविजन करेंगे। हाँ provision करेंगे, but they have to be with me for minimum 5 years. So I will divide that provision. Suppose they are with me for only 2 years. So I will not record expenditure only in the year 2, but I will divide it over 3, 4, 5 until they have not completed their 5 years. I will do the provision, यस but सर। I will divide it over 4 years, and which is called as unrecognized expenses because they have not fulfilled 5 years condition. I will do the provision, but I will divide it over 5 years 5 इयर्स until they have not completed their प्रोविजन eligibility criteria. That is पीरियड। called as unrecognized obligation. Now you understood the term unrecognized because this unrecognized word is very important. यस सर। Unrecognized means expenditure I recorded, but those employees have not fulfilled the condition. And therefore, use your obligation by that 3, 4, 5 years ka expenditure. Okay? You will identify that obligation, but you won't record it. We will record after they Only, complete the 5 we years. will record only after 5 years. We know that we have to pay. Our actuary will give the classification. Our actuary will give that amount also. But we won't record for that those employees who have not completed 5 years of service. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हजम करना पड़ेगा. यस सर। एंड रिकॉग्नाइज किसके लिए होगा? जिन्होंने कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं की है। फुलफिल नहीं किया, मतलब फुलफिल मतलब they already fulfill condition. फुलफिल कर। They are with me for 5 years and I wrongly recorded their expenditure. Not wrongly, I wrongly estimated their expenditure. And that I understood it in the current year. यस सर। So that is recognized past service cost. Now you got the concept of recognized past service cost and unrecognized past service cost. Unrecognized past service cost, I won't record. And I will record only which service cost? Only recognized past service cost in my obligation. Got the concept? यस सर। तुम्हारे जैसा ये भी हैंग हो जाता है बीच बीच में. इजी है बेटा? यस सर।
ठीक है. सो पास्ट सर्विस कॉस्ट, एनीवन हैज क्वेरी? एक बार हिंदी में बता देता हूं बेटा. करंट सर्विस कॉस्ट मतलब जो उस साल का 4,41,000 था, पर होगा क्या कि आपकी सैलरी 10% से हमने एज्यूम किया था, हो गया ये 15% से बढ़ाया. कुछ चीजों की वजह से आपका एस्टिमेट जो है वो पिछले साल का बदल गया. तो पिछले साल का फर्स्ट ईयर का सपोज आंसर आपका 4,41,000 के बदले में 450 आ गया या 470 आ गया, तो एक्स्ट्रा आपको वो अभी थर्ड ईयर के एंड में समझ में आया या फोर्थ ईयर में समझ में आया, तो आप अभी पिछले साल की बैलेंस शीट और पी&एल को ओपन नहीं कर सकते. वंस बुक्स आर क्लोज, तो वो सर्विस कॉस्ट अभी जो है वो आप करंट सर्विस कॉस्ट में ऐड कर दोगे, और वो जो है वो हमारे खर्चे में दिखेगा. जो उसमें भी दो पार्ट्स आएंगे, पास्ट रिकॉग्नाइज, पास्ट में भी रिकॉग्नाइज मतलब जो एम्प्लॉयज ने वो 5 साल कंप्लीट किए, और जो एम्प्लॉयज वो 5 साल कंप्लीट नहीं कर चुके पर हमारे एक्चुअली ने बोल दिया कि भाई ये भी खर्चे में होगा, पर हम लोग उसका जो खर्चा है वो उनके बाकी के पीरियड में, मतलब जो अनएमोटाइज पीरियड है उनका, उसमें वो डिवाइड करेंगे और उसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज, और वो अभी के पी&एल में नहीं जाएगा बेटा, वो होता है अनरिकॉग्नाइज. और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको ये फॉर्मूला एक बार बता दिया ना तो इट विल बी वेरी इजी. आपको क्या याद रखना है? अनरिकॉग्नाइज सर्विस कॉस्ट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज ऑब्लिगेशन. वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज ऑब्लिगेशन. आई नो दिस इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड्स, तो थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है. पिछले बैच में लिया नहीं था, पर इस बैच में बहुत डिटेल में एक एक टर्म बताई है. करेक्ट है कोशिश? यस सर. इंटरेस्ट कॉस्ट तो समझ में आ गया बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हाँ यस. सर. एंड नाउ दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट कि सर एक्चुअल गेन और लॉस क्या होता है. See, first we'll try to understand entries and then I will move to that part, actual gain or loss. Employee benefit expenses, how you are going to record it? That is a past service cost in P&L to DBO. Correct entry? यस सर. Yes. Please do not leave this chapter. अभी आप लोग end पे हो and you are going to understand it. 100% clarity रखो. It's very simple. Once you got the terminologies. Next. Second entry किसकी होगी? सर इंटरेस्ट कॉस्ट टू डीबीओ. Interest cost. What is the interest cost to DBO? Correct. Correct. Now beta, I am going to invest some amount in my plan asset. Correct? Yes, Contribution. What will be the entry? Investment की entry क्या होती है? इन्वेस्टमेंट टू Bank. कंट्रीब्यूशन. बैंक. Investment to contribution, ऐसा entry होता है? नहीं वो तो contribution contribution- account कभी सुना है आपने? नहीं सर. मेरे लिए तो शॉकिंग था. आप मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट हो ना? नहीं सर, इंटर में ही. नहीं, डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट हो या फाउंडेशन के स्टूडेंट थे नहीं, आप? फाउंडेशन से सर. तो आपने मेरे से फाउंडेशन के और ऐसा अकाउंट बनता है क्या, कंट्रीब्यूशन अकाउंट? नहीं सर. कोई बात नहीं, ऐसा कोई अकाउंट बनाता है बेटा. एंट्रीज वही है, डरो मत. इन्वेस्टमेंट टू Yes, बैंक, पर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर कॉलिंग इट एज प्लान एसेट. ओके? Yes, sir. प्लान एसेट टू बैंक, ये बैलेंस शीट में जाता है. प्लान एसेट इज नथिंग बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है? वर्ड्स से डरमिन, ये वर्ड्स ऑब्लिगेशन मतलब क्या? इट्स अ लाइबिलिटी. Liability as a credit balance, expenses as a debit balance. Current Debit service balance. cost expense debit to DBO. Liability, interest to DBO. Expenditure account debit to liability. Liability is a payable balance. Plan asset to bank. Easy? Yes, sir. Now plan asset will give you Interest income. क्या चल रहा है यार? Interest income. So what will be the entry? Cash account debit to interest income account. No beta. Now there is this investment. Normally you are not taking that in cash. Your asset balance will get increase. Okay? So Plan instead of asset taking to interest account. एसेट टू इंटरेस्ट अकाउंट. वेरी गुड बेटा. क्या हो गया बेटा आज? एक अच्छे स्टैंडर्ड पे ऐसी पोजीशन क्यों हो रही है? सो व्हाट विल बी द एंट्री बेटा? Planned asset to interest That account. interest will get accumulated in your investment, no? Because Yes, you are not sir. going to collect that cash, interest in cash. Okay, so my investment will increase due to that interest also. This is my income, interest received, and plant asset नहीं है, वो plan asset है. Plan asset है, वो प्लान एसेट है. प्लांट एसेट हो गया गलती से. इंटरेस्ट अर्न्ड गलती से प्लांट एसेट हुआ है. देन बेटा, if I am getting this, now suppose those employees who are getting retired, I will sell that plan asset.
Yes, sir. So entry will be bank account debit to plan asset, Yes, sir. and Reverse then entry. reverse entry. And then what I'm going to do? हम लोग पे कर देंगे एम्प्लॉयज को. Contribution to bank. But wait, there is something which is called as actuarial loss or gain, correct? Yes, sir. And this actuarial loss, I'm going to record it in the P&L. Okay. Now, Yes, how sir. to calculate this? Yes, we'll see that. Actuarial loss or gain. And if gain is there, entry will be income credit hoga, obligation will get reduced. Now, what is exactly? I will tell you. Don't worry. And then define benefit obligation account debit to bank. So here your employee is getting retired and you are paying him. Okay. Yes. Yes, Tell sir. me a difficult entry. इसमें से कौन सी entry आपको समझ में नहीं आई? सर सब समझ में आई. बहुत इजी है ना? हाँ आप सर. डरते थे ये स्टैंडर्ड से? हाँ सर. क्यों? सर ये थोड़ा टेक्निकल जाता है, जैसे अभी ये कर्टेलमेंट वाला हम पोर्शन करेंगे ना, वो मतलब ये एक्चुअल लॉस और गेन वाला डीबीओ देखते हैं. अभी मैं आपको एक अपेंडिक्स का क्वेश्चन लेके देता हूं. ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. कोई भी क्वेश्चन. Yes, sir. The following information is given about a funded defined benefit plan. Funded means you have invested it somewhere. Unfunded means there is no planning for any plan asset. Okay. To keep interest computation simple, we will assume interest is occurred at the end for simplification. Present value of the fair value of the plan asset is given and interest amount is given. Okay. देखो बेटा, लाइन बाय लाइन जाते हैं. लाइन बाय लाइन. I will open two accounts. One is DBO, defined benefit obligation. Which balance beta? Credit plus debit minus. And plan asset? Debit plus credit minus. What is the opening balance? Yes, both assets has in 2013 1000 balance hai. Kashish ji? Yes, sir. So what I will write over here? Two balance brought down 1000. That I will write it later. Sorry. Obligation hai. Credit plus. Buy balance brought down 1000. Two balance brought down 1000. Okay. Yes, sir. Now what is the discount rate at the start of the year? 10%. 10%. So you have to pay extra amount at the year end on 1000 rupees. Yes, sir. Can I call it as interest? हाँ sir. This is my expenditure which I have paid to on obligation. Yes, sir. On my opening balance. And I will get interest on my plan asset. This is my interest income. Yes, sir. This I will transfer it to P&L debit. And this is my P&L credit. Say yes or no, second effect. Yes, sir. I already explained you these entries. Huh? Yes, sir. 120 rupees. Is it difficult? No, sir. No. Current service cost. What is the entry? The current service cost account is current service cost debit to DBO. Current service cost account debit to DBO. So current service cost second effect P&L के debit में जाएगा. Yes, sir. 130 rupees. Correct? Yes, Then sir. benefits paid. Benefits paid means how I'm going to pay that? By selling my plant. Yes, sir. By selling my plant means by bank.
I sold my plan asset 150 and I paid this benefit to bank. Say yes or no. Yes, sir. 150. So what is important? That you will sell your plan asset and then you will pay the benefit. Okay. Yes, sir. एक सेकंड ना बेटा, एक ही मिनट. Okay. What is the contribution I have done, beta? The contribution 90 rupees. 90. So I invested during the year. Contribution means investment. Yes. Investment means plan asset में invest किया 90. हाँ sir. And what is my present value of the obligation? 1,141. So can you see here? Present value obligation is 1141. Yes, sir. And by balance carried down, what is my plan asset balance? 1092. 109. And balancing figure is what, beta? Balancing figure. This fund balances will be given by actuary. So this is called as actuarial loss or gain. Losses or And plan asset is my investment risk. Okay. So I will call it as actuarial gain or loss. What is the debit balance or credit balance? See where it is exactly. 1000 plus 100 plus 130. My debit balance is 1230. And 1141 plus 150. 1291. So this is on the debit side. How much? 61. 61. And when it is on the debit side, it is a loss. On the credit side, an actual loss. On the credit side, it is by actuarial loss. And second effect is in the P&L debit side. P&L का debit में कितना आएगा? 61. So it's a loss. 61 आ जाएगा. P&L का debit मतलब loss. 61. Loss. And what about plan asset? 1092 plus 150. 1242. And 1000 plus 120 plus 90. 1210. So here it is 32. Actuarial gain. Yes. How much in P&L credit side? 32. So what is the net difference? You will record it in P&L. Actuarial. 61 minus 32. Net off. इसको क्या बोलते हैं? I will record net off. Net off figure 29 in P&L. Okay. In balance sheet, what I'm going to write? 1141 is my obligation. And against that, I have invested 1092. So whether my liability is more or asset is more? So liability is more than asset. That asset. So my net difference in balance sheet, I will record it under defined benefit obligation. What is the balancing figure? 49 rupees. In balance sheet, I will record 49. See the answer. See the answer. How you are going to present it in the notes to accounts. Present value of the obligation, less fair value. There is no unrecognized past service cost. Okay, in this question, I will show you. Unrecognized past service will be in the next इसमें आएगा. And see in P&L क्या क्या जाएगा. P&L में देखो 100 rupees गया. हाँ sir. Interest का. Current service cost 130. See, Yes, current sir. service cost 130, 100. 120 is interest, which is income. So ये net off हो जाएगा. Okay. Yes, So sir. ये 120. To bank, by bank and to bank. ये बैंक अकाउंट में आएगा. ये P&L में नहीं आएगा. And actuarial gain or loss कितना बताया बेटा मैंने? 29 debit. Loss है तो positive. Gain होता तो negative. Negative. Whether there is any past service cost? No. No, sir. Past service cost not given in the first year. So P&L में जाएगा 139. Okay.
and Yes, I have sir. to show this. I was expecting 120 return and my actual gain is 32. So my actual return is 152. Are you able to understand this table? Yes, sir. If you are able to understand this table better, then you can solve any question of DBO. Any question. Yes, sir. ये सबसे मुश्किल टेबल है. ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया. अभी देखो इसमें एक लाइन दिया हुआ है. In 2014-15, the plan was amended. See these sentences. Plan was amended to provide the additional benefit with effect from 1st April 2013. What is Yes, this sir. sentence बेटा? प्लान अमेंड हुआ मतलब क्या बोलेंगे इसको? सर इंटरेस्ट वो नो बेटा, पास्ट डिस्काउंटेड सर्विस है कॉस्ट. और Past service cost. And when it is amended? In 2014-15. So in 2014-15, you have to record past service cost. The Yes, sir. present value of additional benefits is 50 rupees for vested benefits. Vested means what, beta? Those who have completed their 5 years in 5 my years. example. Recognized one. And those who have not completed, non-vested. Non-vested. Non-vested का क्या करते बेटा हम लोग? Sir, It is already incurred in the current service cost. Huh? It is already Yes. there. It is already included in the current past service service cost. cost. हाँ, अभी रुको. हाँ. On 1st April 2013, the estimated average period until the non-vested benefit will become vested was 3 years. कितना years है non-vested का? 3 years. And past service cost arising from this will be divided over 3 years. तो 30 को तुझे कितने साल में डिवाइड करना है? 3 years में. मतलब 10 rupees you will recognize in the 2014-15, 10 rupees in 15-16, and 10 rupees in 16-17. 16-17. So you have to recognize this in 30 rupees you incurred. Correct hai? Yes, sir. 10, 10, 10. 14-15, 15-16, 16-17. Any difficulty? No, sir. रुपया आपका नॉन वेस्टेड का है. It should be deferred. See, recognize you will record as expenses. Recognize Yes, you will record as expenses. But not vested, you won't recognize as expense. 10, 10, 10. अरे समझी क्या? Yes, sir. वो defer हाँ. कर देंगे उसको. डेफर remaining करेंगे. years में. अभी खर्चा कितना किया? 20. उसमें से 20. 10 रिकॉग्नाइज करना है. तो व्हाट इज अनरिकॉग्नाइज्ड? 10. अरे 30 rupees is the total expenses. Unrecognized, non-vested. Out of that, sorry, unrecognized nahi. 30 rupees is a non-vested benefit. Out of that 10 rupees you will recognize in the current year. तो unrecognized कितना हुआ? Sir, 20 rupees हो गया. क्या बोलते हो आप? फिर ऐसा एकदम मस्त चलता रहता है, बीच में से कुछ अलग ही बोल देने का. Now, out of 20, now unrecognized, this 10 rupees is recognized in the second year out of 20. So what is the unrecognized expenses in the second year? Sir, 10. 10. And here it is 0. 0. Now this is already included in the obligation, this 30 rupees. This 30 rupees is already included in the obligation. Included in the obligation. Now you will exclude from the obligation. So what you have to do? Minus. Unrecognized क्या करेंगे हम लोग? Minus कर देंगे. Minus. देखिए, देखिए, -20 किया क्या? हाँ सर. हाँ. एंड -10 किया क्या? हाँ सर. एंड 10 रुपया खर्चा रिकॉर्ड किया क्या? यस सर. 30 था ना टोटल. 10, 10 एंड नेक्स्ट ईयर में 10 आएगा. तो 10 वो आएगा. ईयर पूछा ही नहीं है.
एंड 50 Yes, sir. आपने उसी साल में कर दिया रिकॉर्ड। Yes, sir. क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड वाला था। समझ में आया? वो ऑब्लिगेशन में इंक्लूड है। इंक्लूड है। हाँ, वो ऑब्लिगेशन में ऑलरेडी 30-50 दोनों इंक्लूड था, तो 30 और 50 इंक्लूड था। एक इफेक्ट 50 एक्सपेंसेस एंड 50 इज ऑलरेडी ओवर हियर, सो ऑब्लिगेशन में वापस मत बताओ, वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। यस एंड सर। 30 बढ़ चुका है, पर 30 में से व्हाट इज योर एक्सपेंडिचर? सर 20 एक्सपेंडिचर। अरे एक्सपेंडिचर पी एंड एल में 10 10 10 यस सर। एंड 30 यू रिकॉर्डेड। देखो आपने एंट्री क्या किया, आपने एंट्री किया एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 30 टू ऑब्लिगेशन 30। देन यू रियलाइज्ड कि दिस 30 इज नॉट माई expenditure of the current year, so I will transfer this to P&L only 10 out of 30, यस सर। and I will reduce my obligation by 20 by 20। recording reverse entry. यस सर। So मुझे ऑब्लिगेशन में से 20 माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर। इन नेक्स्ट ईयर 10 I have to माइनस reverse करना पड़ेगा। 10 and I will record expenses 10. That 10। is called as unrecognized service cost, past service cost, which is of unvested option. कौन सा अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट कौन से ऑप्शन का होता है? वेस्टेड या नॉन वेस्टेड? नॉन वेस्टेड। नॉन वेस्टेड। एंड वेस्टेड ऑप्शन is already recorded as expenditure. Very very important concept. वेस्टेड एंड नॉन वेस्टेड। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, वेस्टेड मतलब जिन्होंने अपनी कंडीशन फुलफिल की और पास्ट का खर्चा हमने गलत रिकॉर्ड किया था, इसलिए हमने अभी रिकॉर्ड किया 50 रुपया, और जिन्होंने यस सर। अपना कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो उनका भी 30 रुपया हमने ऑब्लिगेशन बताया, भाई वो हमारे साथ चलेंगे आगे, पर 30 रुपया खर्चा हमें डेफर करना है जब तक वो उनका 3 साल फुलफिल नहीं करते हैं। तो 30 रुपया भले मैंने ऑब्लिगेशन बताया रहेगा, पर वो 30 रुपया मुझे मेरे एक्चुरी ने बताया 30 रुपए का इनका ऑब्लिगेशन है, तो 30 रुपया खर्चा, पर मैं उनको बोलूंगा, एक्चुरी को बोलूंगा तू सिर्फ मुझे वैल्यू बता, वो बोला 30 रुपया ऑब्लिगेशन में ऐड कर दिया है उसने, मैं उसको बोलूंगा भाई ये 30 रुपए में से 10 रुपया जो है वही मेरा खर्चा है, बचा हुआ 20 में अनरिकॉग्नाइज कर दूंगा। यस सर। अगले साल में 10, उसके अगले साल में 10, ये खर्चा डिवाइड करूंगा, और फिर मैंने जो ऑब्लिगेशन बताया है वो 20 में ऊपर से माइनस करूंगा और उसके नेक्स्ट ईयर में 10 माइनस करूंगा, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग 30 रुपया है। यस सर। यस, इससे ज्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। एवरीवन अंडरस्टूड? आशिता, आपको समझ में आया बेटा? यस सर, आया। मुश्किल नहीं लगा ये बिल्कुल भी? सर बहुत मुश्किल लगा बट समझ में आ गया अभी। पूरा? यस सर, आ गया है। एक बार और थोड़ा देख लेंगे तो फिर क्लियर हो बेटा जाएगा। कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, जो लोगों ने अपनी कंडीशन फुलफिल की है 50 रुपया, हमें बाद में रियलाइज हुआ कि ये 50 रुपया जो है वो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट है। मैंने जो पिछले सालों में करंट सर्विस कॉस्ट जो था वो 50 रिकॉर्ड नहीं किया था। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, 50 रुपया मैंने अब भी रिकॉर्ड करना है। जो उन्होंने अपनी कंडीशन, अभी मुझे ध्यान में आया 14-15 में कि वो 13-14 से रिलेटेड था, तो 13-14 की बुक्स में अल्टर कर सकता हूं क्या? नहीं सर। नहीं, तो वो 50 रुपए में अब भी रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आ रहा है? और 30 यस सर। रुपए का जो खर्चा है वो मेरा 30 रुपए का खर्चा मैं डेफर करूंगा, बस कुछ भी नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ना, दुनिया का कितना भी डिफिकल्ट सम होगा वो सॉल्व कर लोगे। देखो अभी अभी देखो, सेकंड ईयर में आप मुझे बताओ, वो 30-20 का छोड़ दो, अभी 50 और 30 का छोड़ दो। हाँ, अभी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट फटाफट बोलिए, आप ही बताएंगे, एकदम इजी है, कुछ नहीं है सेकंड ईयर का। हाँ, सेकंड ईयर में आप ओपनिंग बैलेंस कितना लिखोगे ऑब्लिगेशन में? सर 1141। हाँ देखो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, आप ही बता दोगे पूरा, मुझे गारंटी है। हाँ, ये 1141 आ गया इधर। यस सर। हाँ, और 1092 किधर आएगा बेटा?
टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट है। हाँ, यस सर। अभी इसके ऊपर कितना परसेंट लू? 1141 के ऊपर 9%। देखो कितना आ रहा है। 102.69। क्या बोलते हैं इसको? सर इंटरेस्ट बाय कॉस्ट। इंटरेस्ट। तो 103 कर दूं? यस सर। हाँ, एंड टू एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? 11.1%। 11.1%, कर लो। सर 1:1। 1:1 आ गया बेटा, ये दो हो गए। आगे करंट सर्विस कॉस्ट किधर रिकॉर्ड करूं? एक P&L के डेबिट में और दूसरा प्लान एक डीबीओ के क्रेडिट में। हो गया बाय करंट सर्विस कॉस्ट। क्या बोल रहे हो, मुश्किल है, सब तो बता रहे हो बराबर। 140। नेक्स्ट, बेनिफिट्स पेड, क्या करूं? सर बाय बैंक कर देंगे। प्लान एसेट को मतलब सोल्ड प्लान करेंगे एसेट तो। हमने बेचा, पहले एसेट बेनिफिट्स कहां से पे करेंगे? प्लान एसेट बेचा, और उसके बाद टू बैंक करके बेनिफिट्स पेड। 180 किया, चलो ये भी हो गया। कंट्रीब्यूशन पेड, टू बैंक करेंगे प्लान एसेट में। टू बैंक इन्वेस्टमेंट, हम लोग कहां से ये पैसा हमने किया? करंट सर्विस कॉस्ट के बदले में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन यहाँ पे लिख दूं, यस सर। टू बैलेंस सीडी। एंड इधर बाय बैलेंस सीडी। 1093, चलो 1109, सॉरी। करिए टोटल। एक्चुअल का गेन आया क्या लॉस आया? सर डीबीओ में बाय एक्चुअल लॉस। लॉस आया? नहीं सर, गेन आया। ये 180 है क्या? सॉरी, अच्छा फिर तो लॉस ही है। 1377। हाँ, और ये 1384 आया है मेरा। मेरा गेन आया बेटा इधर, यस सर, मेरा भी गेन आया 7। 7 रुपया गेन आया। वन थ्री लॉस आया मेरा इधर, यस सर। 24 का लॉस। सो लॉस 24 -7 नेट 17। लेट्स चेक द 17। आंसर, लेट्स चेक द आंसर। क्या गलत किया हमने? एक्चुअल लॉस, एक सेकंड ना बेटा, कुछ तो गड़बड़ किया है। एक सेकंड, डीबीओ 1141103। अच्छा हाँ, पास सर्विस कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड किया ना बेटा हमने। ओ यस सर। 24, हाँ ठीक है ना। फिर अपना कितना आया? 24 -7 17, एंड 17 में यू एडेड 50 प्लस 10, सो 50 प्लस 10 60 प्लस 17, सो टोटल इज सी। हाँ ये देखो, एक्चुअल गेन 24 आया, ये करेक्ट आया, करेक्ट है। यस सर, करेक्ट है। एंड एक्चुअल लॉस ये 7 प्लस 60, और क्या लॉस का ये क्या माइनस किया इन्होंने? 24, अच्छा गेन था, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, कितना आया उनका? 63। सो 63 मतलब बेटा 50 रुपया प्लस 10 रुपया 60 रुपया। तो उन्होंने वो ऑब्लिगेशन को रिवर्स किया। ऑब्लिगेशन को कितने से रिवर्स किया? 20 रुपए से। तो 20 रुपए से रिवर्स किया जो पास सर्विस कॉस्ट था, और ये आपका डिफरेंस, ये 7 रुपीज गेन है।
तो 70 unrecognized plus 50 past service cost, 70 minus 7, you are getting this 63 rupees. Unrecognized 20 and 50 recognized. So 70 rupees is a total and 7 rupees is your gain. Yes. तो 13-14 का ये हुआ. Actual gain 84. सी 1141 तो हमने रिकॉर्ड किया था. 103, 140 and 80. 80 is our past service cost and benefits paid 180, 1197. So my actual gain 87. 87 minus actual loss 24 and that's why they recorded. अच्छा सॉरी, मेरा इधर 80 रिकॉर्ड करना था. कितना रिकॉर्ड करना था मुझे? 80 रिकॉर्ड करना था. एंड नेट फिगर विल बी 63. अभी समझ में आया आपको? यस सर. 80 minus 24. वो 80 रिकॉर्ड करना था, मतलब जो भी है. एंड थर्ड ईयर, चलो अभी थर्ड ईयर लास्ट ये देख रहे हैं एंड देन आई विल लीव द क्लास. ये लास्ट आ गया तो आपको पूरा बराबर आ गया. हाँ चलो बोलिए. क्वेश्चन में इधर बताता हूं. हाँ कितना आएगा देखो, बोलिए. सर डीबीओ में 2 बैलेंस बीडी दिखेगा मेरा. 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1197 बाय बैलेंस एंड ये 1295 इधर ही लिख लेता हूं. एंड 1109, 1093. On this I will take 8%. 8%. 96 and 1109 पे 10.3%. 114 करेक्ट है बेटा? यस सर. करंट 114. सर्विस कॉस्ट 150 इधर लिखूं? यस सर. यस. देन बेनिफिट्स पेड 190 इधर एंड प्लान एसेट में बाय बैंक एंड कंट्रीब्यूशन 2 बैंक. 110. Contribution to bank. See the difference. 190. पास सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं आएगा अभी, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है. ओके सर. कितना? नहीं वो पिछले साल ही हमने 80 रिकॉर्ड किया ना. वो ऑब्लिगेशन में 80 ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, उसका डिफरेंस आया था वो. हाँ 1197 प्लस 96 प्लस 150 ये 1443 है. F1485 बाय लॉस कितना? 42. 1093 माइनस 1109 माइनस 114 ये 50 आया मेरा. लॉस ही आया ना? यस सर. सो टोटल लॉस कितना आया? 92. 92. Check. Total loss is 92. Total loss is 92. And you check in the P&L account. The actual loss is 92. Now easy? Yes, sir. And what is my pro forma in the balance sheet? Obligation minus fair value of plan asset and unrecognized past service cost. You got this concept? Unrecognized past service cost? Yes, sir. And in P&L, what are you going to record? Current service cost, first item. Interest cost, correct? Yes, sir. Expected return on plan asset. Yes, sir. Then actuarial loss. Yes, sir. Then past service cost of non-vested benefit, which is Yes, going sir. to defer. And vested benefit recorded in 1 year only, in which 1 year year only. it is identified. And then last column is actual return, expected return. If Plus actual gain, then you will add it to get actual return. Expected return plus actuarial gain. And expected return minus actuarial loss will give you the actual return. Return. And this is the third table you are going to show. In P&L expected return, in P&L expected return. But you have to show your reader actual return also. So this is a pro forma. And these three type of questions will be asked.
What is you are going to present in the balance sheet? What your unrecognized past service cost is related to which option? Vested or non-vested? सर नॉन वेस्टेड. Non-vested. अभी क्लियर हुआ पूरा पिक्चर? यस सर. और ये कंप्लीट करो. AS15 आपका है. इजी है AS15? यस सर. कितना नया टर्मिनोलॉजी समझा आपको? सर वेस्टेड नॉन वेस्टेड समझा, उसके बाद फिर पास सर्विस कॉस्ट का अभी क्लियर हुआ पूरा, एंड देन जर्नल एंट्रीज भी अभी क्लियर हुआ. कॉस्ट सर्विस कॉस्ट, करेंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट का आइडिया था पहले से. और मतलब ऑलमोस्ट yes, अभी समझा, ऐसा ही बोल दो. यस सर, सारा ही अभी समझा मुझे तो. डीबीओ अभी समझा, बाकी तो इजी था. सो थैंक यू. एंड दिस इज अपेंडिक्स. आप मेन एज जो है ना वो आप ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? सो बेयर टेक्स्ट में से मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है एंड आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी. कुछ बचा है क्या देखने दीजिए, सिर्फ 1-2 मिनट में. ऑब्लिगेशन पेड, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन. नाउ इज इट इजी? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, सी present value of defined benefit obligation, then past service cost not yet recognized, that is the unvested option, minus fair value of the plan asset. ठीक है? If you are Yes, getting sir. positive figure, then beta your liabilities are more, and if you are getting negative figure, your asset is more. And asset is more होगा तो सीलिंग ऑप्शन होता है. अभी सीलिंग ऑप्शन छोड़ दीजिए. सीलिंग ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो छोड़ दीजिए उसको. P&L presentation. Yes. Beta Kashish, now I cannot take each and everything. I will take it in the regular batch. हमारा ये नवंबर मंथ में ये स्टैंडर्ड खत्म होगा, तो आप तब ये लेक्चर 1.52 के स्पीड से देख लेना. बिकॉज आई कैनॉट टेक नाउ ऑल इलस्ट्रेशन एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. ओके, प्लीज सॉरी फॉर दैट. एक बार आप वो खुद से सॉल्व कर लेना अभी. ओके. कर्टलमेंट बेटा, कर्टलमेंट एंड सेटलमेंट जो है वो क्या होता है मैं बता देता हूं. कर्टलमेंट कब ऑकर होता है? इफ नाउ यू ओनली टेल मी. कर्टलमेंट मींस योर एम्प्लॉयज आर गेटिंग रिड्यूस. नाउ योर एम्प्लॉयज आर गेटिंग रिड्यूस, इट विल बी योर इनकम और एक्सपेंडिचर बेटा. अशिता, तो यू हैव टू पे लेस और मोर? सर लेस. लेस. सो कर्टलमेंट का आपको नीचे इफेक्ट देना पड़ता है इन P&L. ओके. And settlement means your employee is going to means his obligation now completed. You have to settle it, the transaction. So it might be in loss, it might be in profit. Okay. Returns of plan asset beta, expected return. Actual return कैसे निकालेंगे? Opening plus contribution minus benefit is balancing figure is return closing, and expected return is opening balance into that percentage. That you are aware, no? यस सर. Anji. What are the types of actuarial assumptions? Now this is something is only a theory part. Actuary will do this demographic assumption and financial assumption. We are not concerned for that. Okay. At least from exam point of view. Actually we are concerned, but I'm not going to take it in detail. Okay. In real practice, you will understand this demographic and financial, how it is going to affect your transaction. Means your P&L and balance sheet in detail. But इतना detail में मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा standard है ये अपने आप में. आपको प्रेजेंटेशन समझ में आना. एक्चुअल गेन और लॉस कहां पे रिकॉर्ड किया आपने? P&L में. लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दीज आर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. रीड इट. चलो फास्ट रीड करो एक बार. Long term compensated absence such as long service, jubilee or other long service benefits, long term disability benefits, profit sharing and bonuses payable 12 months or more after they are due, and deferred compensation paid 12 months or more after it's due. See, these are not plan assets. These you are paying because of some disability happens or bonus if you earn in the profit, so you are going to pay that. So tell me, you are going to discount it, no doubt in that, but remember there is no type of plan asset over here. Okay. So accounting both easy hai, similar to contribution plan, similar to contribution plan. तो easy है ये भी. And termination benefits are of two types. कब recognize करना है? जब आपका एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा on his retirement and voluntary retirement. ये केस में termination. और इसका एक डिटेल प्लान बनाओगे and you will estimate the amount. And same thing. So you will discount it. And this is the end of the session, termination benefit. Same entries like contribution plan. Okay.
यस अच्छा, सर, क्लियर। डिफिकल्टी है क्या, बताओ मुझे अभी। नो सर। सर प्लीज टेक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस। ठीक है, विल डू। और कुछ क्वेश्चन? आई थिंक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा ही नाम है क्या, अदर स्टैंडर्ड्स में भी मैं ही हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली। यस, मैं ही हूँ, ठीक है। सो कैसे था AS15 क्लोजिंग रिमार्क, बेटा फटाफट। सर ट्रिकी था, बट आपने बहुत सिंपल कर दिया। अभी एग्जाम में मैं इसको छोड़ के तो नहीं आऊंगी फॉर श्योर, कर हाँ, लूंगी। और अभी आपको सब टर्मिनोलॉजी समझ में आ गए? यस सर, आ गए। ठीक है, थैंक यू कशिश, थैंक यू बेटा। आयुषी थैंक यू बेटा। यस, एंड कॉन्सेप्चुअल था, और आशा करता हूं ये सेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। AS29 100 पेजेस के बुक में से एक बार देख लेना। प्रेजेंट वैल्यू ऑब्लिगेशन क्या होता है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एंड सॉल्व दैट क्वेश्चंस ऑफ बेयर टेक्स्ट। AS29 डाउनलोड इट। AS29 बेयर टेक्स्ट, डोंट डाउनलोड ओनली स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। उसके नीचे के क्वेश्चंस एक बार डाउनलोड कीजिए और वो सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। छोड़ दीजिए।